So now we are going to derive magnetic field on the axis of a circular current carrying coil. Same circular current carrying coil. So we are going to find the magnetic field due to that. So what we have done, we have taken a circular coil whose radius is A, right? From the center of this coil we have taken a point P, right? The distance of this point P from the center of the circle is R. So what we have done, we have taken a circular coil. At the center of the circular coil, just now we have derived that at the center of the circular coil magnetic field is mu naught I upon 2R. At a point P, this is point P, which is at a distance of R. ये वाला जो distance है, this distance is R, right? Now this point P, because ये point अगर हम यहाँ पे dl element लेते हैं, यहाँ पे dl element लेते हैं और इस point P का angle लेते हैं, so ये angle मतलब not we will assume it as 90 degree. This will not be accurately 90 degree, but for our assumption we consider this angle as a greater angle. So this we can approximate to 90 degree. So ये जो angle बनेगा यहाँ पे theta, that angle will be 90 degree. To the radius the angle is always 90 degree, but ये point P का ये जो distance है, ये वाला angle भी हम approximately और ये वाला angle भी approximately we will take it as 90 degree, right? So we will name the whole thing. Yes, this is X, this distance is R, the radius of the circle is O, and it is carrying a current I in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction means what will be the direction of magnetic field? Anti-clockwise means north, so direction of magnetic field is towards the reader, right? So what we have taken, because this angle is 90 degree, this will produce a small magnetic field here in perpendicular direction. Why in perpendicular direction? Remember, this is dl, this is I, ये point P लिया मैंने, ये distance R लिया, right? It is carrying a current I, right? Right hand palm rule. This is current element dl. This is R. What is the direction of magnetic field? Magnetic field will be normal to this. This is dl. This is R. What is the direction of magnetic field? Magnetic field will be normal to the point. So ये इसकी वजह से जो magnetic field है, let us say this is dB. ये कितना है? ये 90 डिग्री है. इससे ये वाला एंगल 90 डिग्री है. सिमिलरली इस dl डैश के वजह से dl डैश एंड dl इज सेम, dl dl भी लिख सकते हैं, dl डैश एंड dl भी लिख सकते हैं. इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी 90 डिग्री हियर, से db डैश. ऑल्दो db एंड db डैश विल बी सेम, कंसीडरिंग dl एंड dl डैश का लेंथ इज सेम. इज दैट क्लियर? दे विल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल, राइट? सो लेट अस से इस पॉइंट को हम P बोल देते हैं. Let us say this angle is, yes, dB cos theta. Let us say this angle is theta, and similarly breaking up this into two components, dB dash cos theta. This angle and this angle would be same, and this part, this dB into dB cos theta and dB sin theta. Similarly dB dash breaking into dB cos theta and dB dash sin theta, right? So any two component which are equal and opposite to each other, they cancel out each other, we have studied. So this dB cos theta and dB dash cos theta will cancel out when dl and dl dash are same. So we will not assume this. So what will be the direction of magnetic field? Direction of magnetic field will be dB sin phi. There will be so many dB sin phi. हमने ये circular loop लिया, dl यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, दो dB मिले, यहाँ पे और यहाँ पे भी ले सकते हैं. अगेन वी विल गेट dB. हर एक पॉइंट पे हम ऐसे dB ले सकते हैं. एंड ऑल दोज कॉस कॉम्पोनेंट विल कैंसिल आउट ईच अदर. इसका भी dB sin phi,
db sin theta, इसका भी db sin theta, इसका भी db sin theta. So what we have to do, we have to add all of them. So जितने भी db sin theta है, we have to integrate all of them in order to find the magnetic field due to a current carrying circular coil at the point P. इन सब db sin phi का जो ये एक्सिस पे जो डायरेक्शन होगा सबको हम एड अप कर देंगे एंड देन इट गिव्स यू द फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू दैट. Yes, and for this point the angle will be 90 degree for the radius. So we'll start with application of Biot-Savart law. According to Biot-Savart's law, dB is equals to mu naught upon 4 pi I dl cross r अपॉन आर क्यूब. थीटा हियर, थीटा हमने उसको कह दिया तो यहाँ पे इसको फाई कह दो. फाई इज 90 डिग्री फॉर दिस, राइट? सो डीबी विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज 1. सो डीबी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर. इक्वेशन 1. Is that clear? Now, and why we have taken this? This angle is 90 degrees since DL is perpendicular to X. DL element, this angle we have approximated as 90 degree, right? So this is the expression, right? Now, let dB and dB dash be the magnetic field due to current elements dl and dl dash. both equal. रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमने इनको dl और dl dash लिखा है. So now we'll resolve db and db dash into two components. Now resolving dB and dB dash into rectangular components. The components dB cos phi cos theta and dB dash cos theta cancels out. Hence net magnetic field is along dB sin phi sin theta or dB dash sin theta because both are same. So can we say that the total magnetic field will be the integration of all dB sin theta? जितने भी ऐसे dB sin theta हमें मिलेंगे सबका हम अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो we will get the magnetic field at point P due to this current carrying circular coil, right? So let us calculate the value of sin theta here. Sin theta will be, yes, this angle is also, because we have taken this is also theta and this is also theta. So what will be the sin theta value? A upon x. The value of sin theta will be A by x. Yes. So magnetic field will be इंटीग्रेशन ऑफ डीबी का वैल्यू हमें पता है कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ए अपॉन एक्स. सो डीबी इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर क्यूब. नाउ दिस आर, yes children, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इज dB. सो ये डिस्टेंस कितना है r, हमने जनरल फॉर्मूले में लिया है. दिस डिस्टेंस विल बी x स्क्वायर हियर. सो वी हैव टू टेक दिस एज x स्क्वायर. यस, इसकी वजह से, और ये वाला डिस्टेंस हमने x लिया है, सो दिस डिस्टेंस विल बी x स्क्वायर. सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन x स्क्वायर इंटू a बाय x. यस चिल्ड्रन, सो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन x स्क्वायर इंटू x बिकम्स x क्यूब. a भी बाहर आ जाएगा एंड व्हाट रिमेन्स इनसाइड? द क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl.
this will be the closed integral of all dv sin phi, right? So if this is dl, what will be the whole length? Whole length will be the circumference. And what is the circumference? Circumference will be 2 pi a. So writing this, b will come out to be mu naught upon 4 pi ia upon x cube into 2 pi a. Solving, देखो, this is pi a and this is a. So this becomes pi a square. So magnetic field can be written as mu naught upon 4 pi I, this 2 also is there, 2i pi a square. 2i pi a square upon x cube. X cube. What is the value of x from this diagram? Applying Pythagoras theorem, the value of x will be, yes, this will be under root a square plus r square, right? Putting the value here, value of b comes out to be mu naught upon 4 pi 2i pi a square upon x का value a square plus r square raised to power half और raised to power 3, तो ये कितना हो गया? Raised to power 3/2. This is the expression for magnetic field on the axis of a circular coil carrying current, CCCC, current carrying circular coil, right? Mu naught upon 4 pi 2i pi a square upon a square plus r square raised to power 3/2. a क्या है यहाँ पे? Radius of the coil. r क्या है यहाँ पे? The distance of point P. So this is your final expression, right? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और कुछ बुक्स में ये वाले 2 को इस 4 से कैंसिल आउट किया हुआ है, एक पाई को यहां से पाई से कैंसिल आउट किया हुआ है. सो इसका सेकेंड फॉर्म भी आता है. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म एंड व्हाट इज द सेकेंड फॉर्म? आई एम राइटिंग दैट ऑल्सो. कुछ बुक्स में ये 2 और पाई को यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है, तो ये आ जाता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू पावर 3/2. So this is the final expression given in some reference books. So somewhere we will use this, but it is better to use this because mu naught upon 4 pi का value you can keep directly. And if there are n number of turns, coil में एक टर्न नहीं है, 500 turns है, तो what we will do? We will multiply this by n also. So mu naught के साथ number of turns n का भी multiply हो जाएगा and I a square upon 2 into a square plus r square is to power 3/2. So this is the expression, an important derivation. It comes in board for 5 marks.